Hello everyone, it's me Rohaba Shahzad. Most of you may know that I am a psychology graduate and I have a lot of interest in psychology and all its concepts. जैसे क्वारंटीन आया, I processed things around me. I looked around and I came to know कि टॉक्सिक एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़ रहा है. जैसे जैसे लाइक सब साथ रह रहे हैं और सब हर वक्त साथ हैं, तो टॉक्सिसिटी काफ़ी बढ़ गई है. और कुछ लोग ऑलरेडी टॉक्सिक हाउस होल्ड्स में रह रहे होते हैं. टॉक्सिक प्लेसेस कुछ भी हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है, वर्क प्लेस भी हो सकती है, कहीं भी स्कूल कॉलेज कुछ भी आपका वो टॉक्सिक प्लेस बन सकती है. सो इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइट थ्रू दोज टॉक्सिसिटी एंड हाउ टू रीगेन योर सेल्फ वर्थ एंड सेल्फ एस्टीम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हम सबको पता होना चाहिए कि if you are living in a toxic environment, it is impossible to change the environment. In most of the cases, what I have observed in DC households, parents are the ones who are at times toxic to their children, or sometimes siblings can be toxic to the other siblings. Yeah, sometimes boss can be toxic to their employee, or the other employees can be toxic to one employee. तो जो भी टॉक्सिक होता है, यूजली ज़्यादातर हालात में क्या होता है कि यू कैन फाइट देम और यू कैन क्योर देम. बाय क्योंकि वो जो जिस टॉक्सिसिटी है ना उनके अंदर, वो आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं, बिकॉज़ वो उनकी नेचर में बस जाती है वो टॉक्सिसिटी. तो उस टॉक्सिसिटी को आप ख़त्म कर ही नहीं सकते. For most of the years, everyone who has been in a toxic environment, they all try to, delete that toxicity out of that person just to save that person, yeah, just to love that person back. But this is not how it works. अगला इंसान कभी भी टॉक्सिक होना बंद नहीं करेगा, या अगर कर भी दिया उसने तो दैट्स अ मिरेकल. बट you can't control how a person acts. But you can control something here, and that is yourself. So सबसे मेजर पॉइंट एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहने का, अच्छे से डील करने का सबसे मेजर पॉइंट ये है कि नो how to change yourself, change your reactions, and the environment will be changed. I've told you that environment change नहीं हो सकता, लोग जो टॉक्सिक लोग हैं वो चेंज नहीं हो सकते. और क्या चेंज हो सकता है, अगर कुछ भी चेंज हो सकता है तो हमारा रिएक्शन उन चीज़ों के लिए. दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड थिंग्स एक्चुअली डू चेंज. एग्जांपल देते हैं एक टीनेजर की और एक पेरेंट की. टीनेजर दरवाजे से अपने रूम से बाहर निकला, एक पेरेंट इज़ लाइक, क्या भाई रोज़ तुम यहाँ पे ऐसे लेट उठते हो और ये सब. आगे से टीनेजर साहब लड़ने शुरू हो गए कि मामा आप हर वक्त मुझे डांटती रहती हैं, ये अच्छी बात नहीं है, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड नाउ द पेरेंट इज़ लाइक एजिटेटेड कि हाउ डिड माई सन और माई डॉटर से समथिंग टू मी. अब हो गई लड़ाई शुरू. अब वो द पेरेंट इज स्कोल्डिंग द सन एंड द सन इज आंसरिंग बैक टू द पेरेंट. What is this doing? This is actually taking out all of the energy from both of the individuals. यहाँ पे हमारा काम क्या होता है, हमारा काम है to preserve our energy, because I think our energy is something that is so important, and this is something that we can't actually donate it to people around us. लोग हमारी एनर्जी लेना ज़रूर चाहते हैं, बट हमारे ऊपर है हम उनको ये वाली एनर्जी कैसे दें, या हम वो एनर्जी अपने तक कैसे रखें और लोगों को लेने ना दें. क्योंकि जब हम एनर्जी एक अच्छे चीज़ पे लगा रहे होते हैं तो इट एक्चुअली गिव्स अस बैक सम प्रोडक्ट. बट जब हमारी एनर्जी ऐसे टॉक्सिक लोगों में लग जाती है, तो जहाँ हमें एनर्जी वाकई में लगानी थी तो क्या होता है, वहाँ हम नहीं लगा पाते हैं. सो वॉट वी हैव टू डू इज़, हम लोग को अपने रिएक्शंस बेहतर करने, अपना कोपिंग मैकेनिज़्म बेहतर करना है और अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी है.
अब इसी सिनेरियो को अगर हम लोग चेंज करें, और सन के तरीके से अगर मैं बता रही हूँ, तो सन आया बाहर और द मॉम गोज लाइक, हाँ बेटा इतना लेट उठते हो एंड ऑल ऑफ दैट, एंड द सन गोज लाइक, हाँ चलिए ठीक है, कल से मैं ट्राई करूँगा जल्दी उठने का. नाउ व्हाट हैपेंस इज the mother is like, okay fine, there is no anger inside the mother, there is no anger inside the son, and there is no quarrel between them. This is how easy it is to resolve a conflict situation, and we have to save ourselves from the conflict situation because we don't want to waste our energy on people who don't deserve it. अब ये तो वो बात हो गई जिसमें यू कैन एक्चुअली से समथिंग, यू नो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ आराम से अच्छे से बोल सकते हो. इन सम सिचुएशंस जहाँ पे जो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है या मार पीट तक आ जाता है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन आइसोलेट योरसेल्फ, यू कैन go from that situation and enter into another situation which is more safe for you, and जहाँ पे वो टॉक्सिक इंसान ना हो. उस सिचुएशन में अगर आप चले जाएं तो क्या होगा, वो टॉक्सिक इंसान नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल सम फाइट इज़ गोइंग टू स्टार्ट विद अ टॉक्सिक पर्सन. व्हाट यू डू इज़ the toxic person is going to come and going to hit you, but what you're like, I don't want to fight with you. You go inside the room, you lock yourself, even though the toxic person is like, I'm going to beat the shit out of this person, but that toxic person can't even get you because you are isolated in the room. And what you have done by isolating yourself, you have actually preserved your energy. You are not fighting back, you are not getting any hitting, you are not actually doing anything which is actually reducing your contact with that toxic person. तो this is the thing, लोग चेंज नहीं हो सकते, इन्वायरमेंट चेंज नहीं हो सकता, बट हमारा रिएक्शन चेंज हो जाता है. और अगर हमारा रिएक्शन चेंज हो जाए तो इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाता है. बिकॉज जो हम लोग फॉर एग्जांपल, जैसे बच्चे ने गुस्से से रिप्लाई दिया तो आगे और मज़ीद गुस्सा आया, और बच्चे ने अगर गुस्से का भी पॉजिटिवली जवाब दिया तो आगे से क्या हुआ, बहुत ही सॉफ्ट रिप्लाई आया. सो व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर, वी आर एक्चुअली चेंजिंग द एनवायरनमेंट थ्रू आवर चेंज रिएक्शंस. Also know that sometimes we have to mentally detach ourselves from a situation or from a person in order to maintain our peace. जब तक हमारा पीस है, हम लोग mentally satisfied, mentally content हैं, तभी हम लोग काम करते रहेंगे. बट जिस टाइम पे हमारा पीस ख़राब हुआ तो हमारा काम भी ख़राब हो जाता है. And it is not easy to mentally detach yourself from a person. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस टॉक्सिक लोग कौन होते हैं, जो हमसे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में. तो अब बहुत मुश्किल होता है अपने आप को हटाना, डिटैच करना ऐसे इंसान से जो हमसे क्लोज हो. बट रेपिटेटिवली अगर कुछ हो, आपके साथ गलत हो रहा हो एंड आपके पीस के साथ वो चीज़ डिस्टर्ब कर रही हो, तो यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ. यू नो, the energy that you have is very important, and that is the thing that you have to invest in yourself. You have to make yourself so amazing, such an amazing hardworking soul, that you don't have to find happiness from someone else, that you don't have to depend on someone else for anything, whether it's for emotions or finances, because we all know that in the end all you have got is yourself. This is something that we need to do. We need to practice self-love as much as we could do that, and it is not as easy, even though I always ask people to love themselves, but to this day I don't love myself 100%, but I do love myself a bit more than I used to do it earlier. I used to hate myself because, you know, one of the things of toxicity around you, what it does, it makes you hate yourself. Because people around you, you think that people around me hate me, but you can't fight them. So in return, what you are going to do is you are going to hate yourself.
But know that this thing, this whole situation is not about you. It's actually about them. The problem is not in you, it's in them. If someone is seeing an issue with you, for example, if you are seeing an issue with me, for example, I don't look good to you, the problem is not in how I look, the problem is how you perceive things. So if someone is seeing an issue in you, the problem is not in you, the problem is in that perception that the person has. So most of the times the problem is not even you. You don't even have to hate yourself for that, because you know that issue does not even exist. अभी मसला आपको अपने ऊपर लग रहा है, वो क्या पता वो दूसरे में ही हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो दूसरे को बुराइयां करते हैं वो अंदर से खुद के लिए इनसिक्योर होते हैं. एंड इट इज़ प्रूवन बाय रिसर्चर्स कि जो बुलीज होते हैं वो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने आप से नाखुश होते हैं, तभी वो दूसरे को अटैक करते हैं. सो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अगले इंसान में बुराई है. और हर वक्त जो इंसान बुराई को देखता है, इसका मतलब उसमें वो बुराई है, तभी उसको नज़र आ रही है बुराई. सो however the person perceives the outer environment, it's actually a reflection of his own mindset. So you don't have to worry about what anyone's mindset is. You just have to know that how beautiful and precious you are, and how strong you are to deal with such an unfair life. And yeah, I hope you all take care of yourself. And if you like my video, please like, share, and subscribe. I really want to create more content for you, but I really want more subscribers as well, so that I know that more people are watching my content. So yeah, thank you so much, guys.